Welcome, students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. Today, on 6th of March, St. Anne's Convent School conducted their annual examination for 8th class, session 22-23. So I'm going to discuss that paper. Time allowed was 3 hours, and maximum marks what you can grab is 8. Let's do it correctly. Section A. All MCQs. आप पूरे के पूरे 20 marks ले सकते हो, 1 mark each for the question. The solution of 2y plus 9 is equal to 4. The solution मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है. So 2y is equal to 4 minus 9, that is minus 5. Y is equal to minus 5 by 2. D part is the right choice. 100 raised power 0, 20 raised power 0, 5 raised power 0 is equal to 100 raised power 0, 1. ये भी 1, ये भी 1, सबको ऐड करना है. क्या आएगा आंसर? 3. D again. Next. 0.00 lies at. कहाँ लाई करता है? It is origin, guys. क्या करना था? 3 questions, 3 seconds लगे सिर्फ करने में. This one. In a 2-digit number, the unit digit is x, tens digit is y, then the number is, okay, ये tens place, ये unit place. Unit digit is x, tens digit is y. अब वो कह रहा है unit digit क्या होगा? 1. tens digit क्या होगा? 10. 10 place होती है उसकी. So ये क्या बन जाएगा? 10y plus x. So 10y plus x is the right option. Next. A bag have 4 red balls, 5 green balls. What is the probability of getting a red ball? A probability of getting a red ball. Probability of an event क्या होता है? Total number of possible outcomes, that is below 4 plus 5, that is 9. And favorable कितने हैं? Red ball के favor कितना है? 4. 4 by 9 is the correct choice. Next. Product of this into this. इन दोनों को multiply करना है. यहाँ पे क्या हो जाए? Multiply. So 3 4s are 12. X का square, Y का square into Z. कौन सा आंसर है? C part. Next. 5 years ago, I was X years old. After 10 years, my age will be. Okay, देखो 5 years ago की बात करी. I was X years of age. अब वो कह रहा है 10 years after. भाई 10 years after तो तब बनेगा जब मेरे पास present age आएगी, right? So 5 years ago, if my age was X, present में 5 साल और बड़ा हो गया present में X plus 5. And after 10 years, भाई x plus 5 के अंदर 10 ऐड कर दे, काम खत्म. So final answer would be x plus 15. Oh, x plus 15 is the right option. Next, question number 8. The algebraic expression 3x plus 2y plus 6 is monomial, binomial, trinomial. क्या होगा? या none of these. कैसे पता चलता है monomial, binomial, trinomial? Number of terms है. कितनी terms आई मेरे पास? 3 terms. तो क्या होगा? Trinomial. C part is the right choice. The area of rhombus whose diagonals are of length 10 centimeter and 8 centimeter. So area of rhombus, very simple thing. Area of rhombus is half d1 into d2. So half is over here. What is d1? That is 10. What is d2? That is 8. 2 ones are 2. So यहाँ पे 2 fours are 8. 2 ones are 2. That will come out to be 41 centimeter square. That is next. If a die is thrown in the air, the probability of getting an even number. फिर से probability की बात करी, तो probability of an event क्या होता है? Total number of favorable outcomes. Favorable कितना है? If you throw a dice in a year, air में नहीं, throw a dice in a year, क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6. क्या हो सकते हैं total number? कुछ भी आ सकता है. Even number के लिए मेरे को क्या चाहिए? 2, 4 and 6. So answer would be 3 by 6. क्या दिया हुआ है? No. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So this becomes 1 by 2. B is the right choice. A cuboid has how many edges? Cuboid. यार मेरे को तो भूल गया. जब नहीं याद तो गिन लो. How many edges are there? Right, cuboid बनाया मैंने. So let's count the base. Base पे देखो कितनी है? 1, 2, 3, 4. और टॉप पे 1, 2, 3, 4, 8 हो गई. इस साइड पे 2 इंक्रीज हो गई 10
एंड इस साइड पे 2 और इंक्रीज हो गई। आंसर इज डी पार्ट। 12th, in which of the following two expressions are like terms? Like terms means same variable। तभी तो वेरिएबल अगर सेम होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल भी और वेरिएबल भी सेम होगा, तभी तो मैं कहूंगा कि भाई लाइक टर्म्स है। अब बोलो 7x 7y वेरिएबल क्या है अलग अलग, ये तो नहीं है। 7x 9x ऑफ कोर्स बी पार्ट इज द राइट चॉइस, बट दूसरे भी चेक कर लेने चाहिए। 7x 7x स्क्वायर, अब बोलो यहां x और यहां x स्क्वायर लाइक हुई? एब्सोल्युटली नॉट। 7x 7xy yx का आ गया। बी जो हमने चूज किया था एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट? एन एग्जांपल ऑफ अ कोन इज ट्यूबलाइट। लाइट कोन की शेप में होती है। कोनिकल टेंट, बॉल, बॉक्स। कोन बोला उसने, कोनिकल टेंट याद दे दिया, तो कोनिकल टेंट ही होगा ना यार, कोन कितना सिंपल था। नेक्स्ट वन, द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is this, area of base is this much, is, अच्छा हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालनी है। ओके ये आया मेरे पास सिलेंडर, मैंने रफ बनाया, राइट? एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, दिस इज द एरिया ऑफ बेस, that is given to be 25 centimeters square, and the height is to be found out, volume is given to be 275 centimeter cube। okay, so भाई देखो, volume is equal to area of base into height. This comes out to be 275. What is area of base? That is 25 height, right? So height is equal to 275 by, so 25 कितने टाइम से जाएगा? 25 to 10, मतलब कि 25 11 टाइम्स से जाएगा। So h is equal to 11 centimeters है मेरे पास। yes is the right option। next, what is the value of 4 square into 4 raised to the power minus 2? bases are same, बीच में multiplication है, powers को add कर दो, 2 plus minus 2, so yeah, 2 minus 2 4 raised power 0 which is 1 की part। इतना ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा लिखना था आंसर। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, मेरे पास डेसिमल यहाँ है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये यहां से यहां है, राइट? डेसिमल यहां से उठ के, तो डेसिमल मैंने बड़ा सा बना दिया, तो 7.0 ऑफ कोर्स यहाँ पे 7 लिखा है which is one and the same thing into 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 raised power 8, so 7 into 10 raised power 8 is a part। next, factors of this are, अब भाई इसके फैक्टर्स लिखने हैं, बीच में माइनस आ रहा है, स्क्वायर बना सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 7p का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सो दिस वुड बिकम 7p plus 6 into 7p minus 6। 7p plus 6 into 7p minus 6, C part is the right choice। Next, the common factor of this this is, उसने बोला कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आए कोफिशिएंट्स। ऐसा नंबर सोचो भाई जो सबका मल्टीपल हो, 24 36 में तो 12 ही आ रहा है, 24 48 तो ठीक है, तो 12 आएगा एक, तो ए क्यूब ए रेस पावर 4 ए क्यूब ए क्यूब, बी रेस पावर 4, यहां तो बी है ही नहीं, बी रेस पावर बी तो नहीं होगा, सी यहां यही है आंसर, बना ही नहीं मेरे को कुछ और, कहां गया? ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, व्हेन वी फैक्टराइज दिस वी गेट, फैक्टराइज करना ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, राइट? टू नंबर्स को ऐड किया इट शुड बी 5 एंड टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया इट शुड बी 6। कौन सा नंबर लू? 2 and 3, 2 and 3, राइट? सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, पहले दो में कॉमन, x into x plus 6। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टू? इसमें से कॉमन 3 कॉमन, x plus 2। अब ये टर्म 1 ये टर्म 2 कॉमन क्या आएगा? x plus 2 इज कॉमन, यहां पे क्या बच गया? x plus 3, x plus 2 x plus 3, a part is the right choice। Write the coordinates of the point, x coordinate is 3, okay, y coordinate is 4, तो 3 4 b part, ये तो पढ़ो और लिखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, दैट्स इट। अब चलते हैं सेक्शन बी, एमसीक्यूज खत्म, सब्जेक्टिव पेपर शुरू। You have to do it in the right.
From a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. Find the probability. Probability का क्वेश्चन है. Probability के क्वेश्चन के अंदर probability of an event is equal to, नीचे क्या आएगा? Number of, पर एक्चुअली नंबर भी नहीं बोलना चाहिए, टी लगा देना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवर कर रहे हैं इवेंट को. That's it. So probability of an event of getting read. ठीक है. अब बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव 52 कार्ड्स, सो टोटल इज 52. ठीक है. अब रेड कार्ड होते कितने हैं? रेड कार्ड मेरे पास आएगा कहां से? देखो, स्पेड्स इज ब्लैक, क्लब इज ब्लैक, सो हार्ट्स एंड डायमंड्स व्हिच आर रेड, सो 13 plus 13 that is 26. 26 ones are 26 twos are 1 by 2. अब B part, probability of getting an event is getting a jack. Total number of possible outcomes, that is 52. Jack, यार एक स्पेड का, एक क्लब का, एक किसका, डायमंड्स का, और एक किसका, हार्ट्स का, राइट? So 4 हुए. 4 ones are 4, 13 times. So this would become 1 by, that's simple. Next 2 marks को grab करते हैं. Factorize 15xy minus 6x plus 5y minus 2. Factorize करना है. What should I do? कॉमन ले लेते हैं यार, और तो कुछ दिख नहीं रहा. 4 टर्म्स है, कॉमन लेते हैं. What should I take common? 3 कॉमन आना चाहिए और x कॉमन आना चाहिए. क्या बचेगा? 3 5s are 15 एंड x भी ले लिया तो y बचा. माइनस 3 निकाल लिया, यहाँ पे 2 बचा, प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा? 5y minus 2. तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सो 5y minus 2, और यहाँ पे क्या आया? 3x plus 1. Next, using suitable identity, evaluate. 1 आइडेंटिटी का ही यूज करना है. 102 का स्क्वायर. यार 102 का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूं इसको? 100 plus 2 का स्क्वायर, राइट? क्या बनेगा? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. दिस बिकम्स 10,000. So 400 plus 4. This become 10,404. That's it. Using Euler's formula, vertices मुझे निकालने हैं. Faces are 5, edges are 9. अब मेरे को बताना है using Euler formula, find V. और of course वो Euler formula को follow करेगा. So V plus F is equal to E plus 2. So V मुझे निकालना है, F is 5, E is 9 plus 2. So V is equal to 11 minus 5. V is equal to 11 minus 5, that is 6. Vertices are there. 26. Find the area of trapezium when its parallel sides are 20 mm and 44 meters. 20 meters and 44 meters, and the distance between them is 15. Okay, trapezium निकालना है, area of trapezium. So first we have to visualize so that हम formula गलत ना लगाएं. This is given to be 44, means A is given to be 44, B is given to be 20, and the distance between them, which is given as h, which is 50 meters. So what is the area of trapezium? We already know, everyone, right? So half into sum of parallel sides into height. Height means distance between them. So area is given to be half into, this comes out to be 44 plus 20 into 15. So 1 by 2. 44 plus 20, that is 64 into 15. So 2, 32 times. So 32 into 15, that is 480, of course, meters. This is the area of the trapezium. Next. अब 3 marks के क्वेश्चन शुरू हो गए. We have reached section C. Let's do it. Solve this. भी कभी भी लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होता है, सारी x टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और सारे नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड. सो मैं इसको सिंपल लिखूंगा. 6x plus 1 by 3 minus x minus 3 by 6 is equal to minus. LCM,
3 2s are, so 2 ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6x plus 1 minus 1 time x minus 3 और यहां पे आ गया माइनस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के 2 6 12x plus 2 minus x plus 3 is equal to minus 6. This comes out to be 11x. यहाँ पे minus 6 and minus 5. So 11x is equal to minus 11. So I can find x is equal. See, done. Divide this by x minus 2 by long division method. Okay. Long division method से इसको divide कर देते हैं. Okay. So long division method, ये रहा x cube minus 6x square plus 9x minus 2. यहाँ पे आ गया मेरे पास x. So what should we do? x को किससे मल्टीप्लाई करूं x क्यूब बन जाए? x स्क्वायर से, so this becomes x क्यूब. यहाँ पे बन गया मेरे पास minus 2, right? This goes off. This is minus 4 x square plus 9x minus. अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं? minus 4x से, minus 4x square minus minus plus. ये गया माइनस x minus 2 किससे मल्टीप्लाई करूं? plus 1 x minus 2. This goes off, this goes off, this becomes 0. So long division method is successful. आपके पास quotient आ गया, आपके पास remainder आ गया, divide कर दिया using long division method. Quite simple, straightforward one, right? The following line graph shows yearly sales, right? Now, in which year was the sale maximum? Maximum कहाँ थी? यहाँ पे. Can we find out? Yes, it was in the year 2000. What was the sale in year 2003? Here, that would be 7 crores. Next, find the difference in sales of year 2004 to 2006. 2004 में कितनी थी? 6 crores. And 2006 में कितनी थी? 7 crores. So 2004 में it was 6 crores and 2006 में it was 7 crores. So difference, that is 1 crore. That's it. Next, evaluate 1 by 3 raised to the power minus 3 minus 1 by 2 raised power minus 3 divided by 1 by 4 raised power. Law of exponents तो लग ही नहीं सकते because बीच में है minus. So 1 by 3 raised to the power minus 3 पे एक ही चीज लगेगी, a raised to the power m raised to the power n, which is equal to a raised to the power n, right? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 raised to the power minus 1 raised to the power minus 3 minus 2 raised to the power minus 1 raised to the power minus 3. This I'm going to use divided by यहाँ पे भी 4 raised to the power minus 1 raised to the power minus 3. This becomes 3 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 3. So this becomes 27 minus 8 divided by 64. So final answer is 27 minus 8 is 19 divided by simple. Next, question number 30. Question number 30 is on simplification. क्या लगाना है हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगानी है. Very simple. So x को मैं पहले पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, then y को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा. So distributive property is in effect x into 2x plus y plus y into 2x plus y. Distributive property लगा दी मैंने. Then again x is multiplied with this and 2y is again multiplied with this. So x into x minus y
प्लस 2y into x minus 5, राइट। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x into 2x is 2x square, x into y is y, प्लस y को 2x से मल्टीप्लाई किया 2xy, फिर y को मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू y स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, यहां पे माइनस y, प्लस 2y को मल्टीप्लाई किया 2xy, 2y को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 स्क्वायर, 2x स्क्वायर कहीं और x स्क्वायर है, यहां पे है, दैट विल बिकम 3 स्क्वायर। अब xy माइनस x, ये तो कैंसिल ही हो गया, 2xy that becomes 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सो ये बन जाएगा माइनस, दैट्स इट, फुल मार्क्स। नेक्स्ट 31, सिंप्लीफाई दिस। सो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो 3 रेज टू द पावर माइनस 5 तो वैसे ही रहेगा, 10 को तोड़ना जरूरी है, 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2 into 5 raised to the power into 5 raised to the power 3। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, a raised to the power m into b raised to the power m is equal to a into b raised to the power, इसका यूज किया, divided by 5 raised to the power minus 7 into again 2 into 3 raised to the power 5, right? So this becomes 3 raised to the power minus 5 into 2 raised to the power minus 5 into 5 raised to the power minus 5 into 5 raised to the power 3. Denominator में 5 raised to the power minus 7 into 2 raised to the power minus 5 into 3 raised to the power minus 5. Right? यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे भी 3 की पावर, 3 की पावर minus 5 minus of minus 5 into 2 raised to the power minus 5, 2 raised to the power minus 5 into minus of minus 5, done, into 5 raised to the power minus 5 into into क्यों, into 5 raised to the power 3 था तो plus 3 हो जाएगा, और minus of minus 7 I used it directly। कौन कौन से यहाँ पे यूज करें, a raised to the power m divided by b raised to the power a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. I use this, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus, use this as well, so यहाँ पे आ जाएगा 3 raised to the power 0 into 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 7 plus 3 10 हो जाएगा, minus 5 5 हो जाएगा, 5 raised to the power 5, so 5 raised to the power 5 is 3 1 5, quite straightforward. Set. Next one, section D. Now each question carries 4 marks. Mr. Sohan Lal is a bank manager. He launched a scheme in which bank is giving 10% on the deposit made by the senior citizens. He got a few deposits from the senior citizen given below. Deposit of 1000, interest is 100, so as on 2000 पे 200 पे, 4000 पे 400, 6000 पे 600 and 8000 पे 800. Draw a line graph between money deposited and simple interest, right? अब line graph बनाना है, तो line graph हम बना देते हैं, it is already made for you। ये 0, x axis पे deposits and y axis पे annual simple interest, ठीक है, in rupees। so scale आपको लिखना बहुत जरूरी है, 1000 पे 100, 2000 पे 200, 3000 पे 400 and 6000 पे 600 and 8000 पे 800, it is already marked, right? इसके बाद बोला use a graph to find the interest deposit on 5000। ओके 5000 पे इंटरेस्ट निकालना है, तो 5000 पे मैंने इंटरेस्ट निकाला, 5000 से सीधा परपेंडिकुलर, इट मीन्स हियर दिस इज 500, सो यहां पे आ गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 rupees, right? On how much money interest will be rupees 3000, मतलब कि डिपॉजिट निकालना, 300 पे कितना आएगा, 300 पे 3000 has to be the deposit,
as you can see in the graph. तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर सकता हूँ, right? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा deposit of rupees 3,000, right? Next one. अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33. In a building, there are 24 cylindrical pillars. Okay, 24 pillars were there. Diameter of each pillar was 28 centimeters. Height was 4 meters. What is the radius of each pillar? Radius निकालना है for each pillar. Of course, मेरे को diameter दिया हुआ है. Diameter was given as 28 centimeters. So I can find the radius. That is quite simple. Diameter by 2. So 28 by 2, which is given to be 14 centimeters. Quite simple. अब B part पे चलते हैं. Find the curved surface area of 24 pillars. मैं सबसे पहले निकालता हूं curved surface area of one pillar. अब curved surface area क्या? Cylindrical pillars का क्या होगा? 2 pi r into h. So 2 is okay. 22 by 7 is okay. अब radius is 14 centimeters. 14 by 100. H is 7. 2s are 14. And this comes out to be 3.52 square. But मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर थोड़ा ना निकालना था, मेरे को निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 28 पिलर्स. So curved surface area of one pillar into 28. So 3.52 into 24. So this comes out to be 84.48 meters square. Right? Point. And the last one was find the total cost of painting of all the pillars at the rate of rupees 8 per meter square. Okay. Cost of painting. मतलब कि cost निकालनी है मेरे को. Cost will be given by curved surface area of 28 pillars into right. So ये मुझे दिया हुआ है 84.48, which is already found out. Rate is into 8, of course, into 8 rupees. That comes out to be 675.84. This is the cost. Next question पे चलते हैं. Question number 34. The weight of 30 students of a class are given below. Prepare the frequency distribution table using the class interval, one of the class interval as this, and then draw the histogram to represent the above data. Right? अब frequency distribution table के लिए आपको lowest observation चाहिए. Right? Lowest observation आपको दिख रही होगी. That would be 26. Right? ये देखो. And then you have to find the highest observation. What is the highest observation? That is 46. ये रही highest observation भी आपके पास. Now you have to find the range. 46 minus 26. That is going to give you, right? So range भी आ गया आपके पास. Now हम लोग frequency distribution table बनाएंगे. So class interval 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, tally marks and the frequency. You have to check the total has to go to 30. Yes. So 2 plus 7 is 9 plus 11 is 20 plus 10 is 30. Bilkul simple, straightforward. And now the histogram. Number of students on y-axis, weight on x-axis, scale x-axis and y-axis पे मैंने scale भी बना दिया है. And this is the histogram. Don't mind, थोड़ी बहुत मेरे जो rectangles हैं वो थोड़े बहुत टेढ़े हैं because it was hand drawn. Right? Next question. Section E. Now each question carries 5 marks. Let's do it. इस question के अंदर हमें different चीजें लगानी पड़ेंगी. So 25a square को मैं 5a का whole square लिख सकता हूं. माइनस है, माइनस को कॉमन लिया जा सकता है. This would become 4b square minus 28bc plus 49 square. Right? अब क्या किया जाए? यार 5a square is absolutely fine with me, right? क्योंकि a square बना दिया मैंने. अब इसको किसका स्क्वायर लिखूं? 2b का स्क्वायर माइनस
2b और c यहां पे डालना है प्लस 7c का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे आ गया 2b और यहां पे आ गया 7c, ऑफ कोर्स माइनस 28bc बन चुका है। तो मैंने यूज क्या किया, मैंने यूज किया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यूज दिस, राइट। सो यहां पे क्या बना, 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। नाउ मेरे को एक और चीज दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको क्या से लिखूंगा, बिकॉज फैक्टराइज करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो यहां पे x प्लस वाई बनाना पड़ेगा और साथ में x माइनस वाई, राइट। दिस वुड बी 5a एंड यहां पे आ गया 2b माइनस 7c, यहां पे आ गया 5a, यहां पे आ गया 2b माइनस 7c, राइट। तो ये आया 5a प्लस 2b माइनस 7c, यहां पे 5a माइनस 2b plus 7. Yeah, it was that simple, guys. 5 marks are yours. A positive number is 5 times another number. Okay. So let the first number be, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ first, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ second. So let the first number be x. So the other number would be 5x. Now 21 is added. This becomes x plus 21 and यहाँ पे बन गया 5x plus 21. Both the numbers पे मैंने 21 add कर दिया. Then one of the new number becomes twice the other new number. One of them, उसने बताया नहीं कौन सा, अब तुम खुद सोचो x plus 21 बड़ा होगा या 5x plus 21 बड़ा होगा. Of course 5x plus 21 will be bigger, is equal to twice the other new number, right? Other new number is x plus 21. So this becomes 5x plus 21. Of course यहाँ पे distributive property लगा के 2x plus 42. अब इसको मैं इधर ले आया, this would become 3x, और इसको मैं इधर ले गया, this would become 21. Of course 21 minus हुआ, so 21 by 3, this would become, x becomes, what are the numbers? So the first number is 7. And what about the second number? Second number would be 7 5s are 35. That's it. Another 5 marks in your bag. Next one. From the sum of this and this, subtract the sum of this and this. Okay. So मतलब कि पहले तो मेरे को सम करना है इसका प्लस इसका, इन दोनों का सम किया, राइट, लिख दिया मैंने, फिर इन दोनों का सम किया, राइट, इसका और इसका, 2p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 3, ये सम किया और ये माइनस कर, एज सिंपल एज दैट. जो उसने बोला मैंने वैसे का वैसा. तो बीच में प्लस था, ऑफ कोर्स ब्रैकेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p प्लस ये तो आ गया माइनस, ब्रैकेट वैसी की वैसी, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 7p प्लस 3p 5 माइनस 3 प्लस 2 बन गया, राइट, प्लस 2 बन गया. नेगेटिव आ गया, सो इट इज गोइंग टू बी, साइन आर गोइंग टू बी चेंज. यहां पे साइन चेंज नहीं होंगे, यहां पे साइन चेंज होंगे. माइनस 4p स्क्वायर माइनस 3p माइनस, this goes off, minus 10p plus 2, or minus 2 is 2. This is your final answer. Again 5 marks are yours. Itna hi simple question. And the very last question, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing the garden
around the house at the rate of rupees 55 per meter square. So मेरे को तो निकालनी है क्या? Total cost. This is to be found out. Total cost मुझे निकालनी है. तो total cost कैसे निकलेगी? अगर एरिया ऑफ गार्डन मुझे मिल जाए इनटू रेट. रेट आई ऑलरेडी हैव. टोटल कॉस्ट तो मैं इजीली निकाल सकता हूं अगर एरिया ऑफ गार्डन मिल जाए, राइट? सो एरिया ऑफ गार्डन कैसे मिलेगा? मेरे पास क्या है? एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाउस प्लस एरिया ऑफ गार्डन, right? Area of plot I can find because it is a square 25 into 25, right? फॉर्मूला भाई खुद लिख सकते हो. 25 into 25. Area of house क्या है? It's a rectangle 20 into 15 plus area of garden. Of course area of a square आपको लिखना पड़ेगा a square. Area of rectangle आपको लिखना पड़ेगा l into b. Of course ये लिख के दिखाना पड़ेगा, otherwise नंबर कट जाएंगे भाई, ध्यान से. 25 into 25, that is 625, minus 25 into 15, that is 300, which is equal to area garden. This becomes 325, right? 325 kya? Meter square, that is the area garden, right? So now I need to find the total cost. So total cost kitni hogi? Total cost is given by area of garden, that is 325 into, and rate is 55 per meter square. So 325 into 55, that is 17,875 total cost. So this concludes the discussion of St. Anne's Convent School Class 8th Annual Examination for Session 22-23 Mathematics subjects. Thank you so much, guys. Have a great day. Bye-bye.